Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you all are hale and hearty and enjoying the weather. We have learned the basis of molecular biotechnology in a previous lesson. Today we will discuss the processes from DNA to the formation of proteins. The topics that we are going to cover in this lesson includes replication, transcription and translation. Let's start our discussion with the structure of DNA. Although DNA may be differently organized in various organisms, one or more double-stranded DNA molecules in a helix conformation are the predominant structures. Strands of DNA are composed of four specific building elements, shortly written as A, G, T and C. The deoxyribonucleotides, deoxyadenosine 5' triphosphate, which is called as DATP, and deoxycytidine 5' triphosphate, which is known as DCTP, deoxyguanosine 5' triphosphate, which is known as DGTP, and deoxythymidine 5' triphosphate, which is known as DTTP, linked by phosphodiester bonds. The two strands in the double helix are held together through hydrogen bonds. Here you can see the two strands are held together by hydrogen bonds between the nucleotides in the various strands. The DNA strand in the helix are complementary in their nucleotide composition. An A in one strand is always facing a T in the other one, while C is always facing a G. Moreover, these strands in double-stranded DNA run anti-parallel. The 5' end or 5' phosphate end of the one strand faces the 3' phosphate end of the complementary strand and the other way around. DNA डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंटली ऑर्गेनाइज होता है. कहीं पर एक स्ट्रैंड का डीएनए मॉलिक्यूल होता है और कहीं डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल पाए जाते हैं. डीएनए की स्ट्रैंड 4 बेसिक बिल्डिंग एलिमेंट से कंपोज्ड होती हैं, जिन्हें हम कॉमनली ACGT कहते हैं. ठीक है, दो स्ट्रैंड्स डीएनए में held होती हैं with the hydrogen bond between nucleotides. ये जो AT और GC न्यूक्लियोटाइड है, इनके दरमियान जो बॉन्डिंग है दैट इज़ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग. डीएनए स्ट्रैंड हीलिक्स स्ट्रक्चर में कॉम्प्लीमेंट्री होती हैं न्यूक्लियोटाइड कॉम्पोजिशन में. लाइक A will always be facing T and C will always be facing G. Strands double helix या double stranded DNA के अंदर एंटी पैरेलल रन करती हैं, दैट इज़ फ्रॉम 5 to 3' डायरेक्शन, और कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड 3' to 5' डायरेक्शन के अंदर रन करेगी. During the cell division, the genetic information in a parental cell is transferred into the daughter cells by DNA replication. Essential in the very complex DNA replication processes is the action of the DNA polymerases. During replication, each DNA strand is copied into complementary strands that runs anti-parallel. The topological constraint for replication due to the double helix structure of the DNA is solved by unbinding of the helix, which is catalyzed by the enzyme helicase. In a set of biochemical events, deoxyribonucleotide monomers are added one by one
to the end of the growing DNA strand from in a 5 to 3 primer direction. DNA replication starts from the specific sites which are called as origin of replications or ORI sites. The bacterial chromosome and many plasmids have only one each site. In much larger eukaryotic genomes, there can be hundreds of ORIs present. सेल डिवीजन के दौरान जेनेटिक इन्फॉर्मेशन पेरेंटल सेल के अंदर ट्रांसफ़र होती है या पेरेंटल सेल से डॉटर सेल के अंदर ट्रांसफ़र होती है बाय डीएनए रेप्लिकेशन. कॉम्प्लेक्स डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस के अंदर डीएनए पॉलीमरेजेस जो एंजाइम है उनका एक्शन एक एसेंशियल इम्पोर्टेंस रखता है. रेप्लिकेशन के दौरान एक डीएनए स्ट्रैंड कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रैंड के अंदर कॉपी होती है विच रन्स एंटी पैरेलल इन डायरेक्शन. अगर हम टोपोलॉजिकल कंस्ट्रेंट्स की बात करें रेप्लिकेशन में तो डबल हीलिक्स स्ट्रक्चर होने की वजह से डीएनए की अनवाइंडिंग ज़रूरी होती है एंड दिस इज़ कैटलाइज्ड बाय द एंजाइम हेलिकेज. डीएनए रेप्लिकेशन डिफरेंट साइट से स्टार्ट हो सकती है इन यूकैरियोटिक सेल्स बिकॉज यूकैरियोटिक जीनोम्स के अंदर मल्टीपल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशंस एग्जिस्ट करते हैं. लेकिन प्रोकैरियोटिक जीनोम के अंदर या बैक्टीरियल क्रोमोसोम के अंदर सिर्फ एक रीजन ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन एग्जिस्ट करता है. अगर आप इस डायग्राम को देखें तो ये एक्चुअली रेप्लिकेशन फोक को डिस्क्राइब कर रही है. यहाँ पर डिफरेंट एंजाइम्स क्या क्या काम कर रहे हैं वो दिखाए गए हैं. डीएनए पॉलीमरेजेस न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस को ज्वाइन करता है. दो स्ट्रैंड्स ड्यूरिंग रेप्लिकेशन फॉर्म होती हैं, एक लीडिंग स्ट्रैंड और एक लैगिंग स्ट्रैंड. लैगिंग स्ट्रैंड्स के अंदर ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स फॉर्म होते हैं बिकॉज ये स्ट्रैंड एक्चुअली 3 प्राइम डायरेक्शन से 5 प्राइम डायरेक्शन में रन कर रही होती है और रेप्लिकेशन 5 प्राइम डायरेक्शन से 3 प्राइम डायरेक्शन में होनी है. तो डिफरेंट रेप्लिकेशन जॉइंट्स हैं जिनको लाइगेज एंजाइम आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रेप्लिकेशन जॉइन करता है. सिंगल स्टैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स अनबाइंडिंग में हेल्प करती हैं. वंस दे आर एडेड टू इट bacterial chromosome or the eukaryotic chromosome remain unbinded. If they are split from here, helicase enzyme जो कि unbind कर रहा है DNA को वो again bind हो जाएगा and replication would be prohibited. For circular DNA molecules like bacterial chromosomes and plasmids, there are two possible ways of replication. Semi-conservative replication, which is shown over here in A diagram, proceeding in the closed circle as such in one way. Here you can see that the replication is proceeding in a closed circle in one way. This is called as semi-conservative replication. The constraint brought forward by the rotation as a consequence of the unbinding of there is no free end is resolved by the activity of a special class of enzymes, the topoisomerases. Alternatively, replication proceeds via rolling circle model, which is shown here in this diagram. In that case, the replication starts by cutting one of the DNA strands in the ORI region and then proceeded as indicated here. Circular DNA molecules के अंदर या circular DNA molecule जो बैक्टीरियल क्रोमोसोम है या प्लाज्मिड है, इनमें दो पॉसिबल वेज होते हैं रेप्लिकेशन के. एक सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन कहलाती है और दूसरी रोलिंग सर्कल मॉडल कहलाता है. सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन के अंदर अनबाइंडिंग टोपोआइसोमरेजेस के थ्रू होती है और विद इन अ सर्कल रेप्लिकेशन एग्जिस्ट कर रही है, यानी द सर्कल इज़ नॉट बीइंग ब्रोकन डाउन. रोलिंग सर्कल मॉडल के अंदर ओरी रीजन से कटिंग होती है डबल स्ट्रैंडेड
DNA molecule की, and the replication is processed in a linear way. Bacterial plasmids are defined as autonomously replicating DNA molecules. The basis for that statement is the presence of an oocyte in the plasmid. The qualification autonomous, however, does not imply that a plasmid is independent from the host factors for replication and expression. Some plasmids depend on very specific host factors, and consequently they can only replicate in specific hosts. Other plasmids are less specific as their host factor requirements are able to replicate in a broad set of hosts. Moving further to the next part, which is preceded by replication, is transcription. Genetic information is located in the genes formed by discrete segments of the cellular DNA. In a process called transcription, genes are copied into a complementary length of ribonucleic acid by the enzyme RNA polymerase. Most of the RNA molecules, the messenger RNAs, specify the amino acid composition of the cellular proteins. Other RNA molecules derived by transcription, that is ribosomal RNA, rRNA, and transfer RNA, participate as auxiliary molecules for translation. Recently, microRNA transcripts were found in all sorts of cells. These small molecules, described as siRNAs, play an important role in the regulation of protein synthesis. The discovery of how the specific arrangement of nucleotides in the gene codes the sequence of amino acids in the polypeptide, the unraveling of the genetic code, is one of the milestones of the DNA's epoch. It was found that triplets of nucleotides in the DNA and consequently in the messenger RNA code for the amino acid composition of a protein. Most important was finding that the genetic code was almost universal in nature. A given triplet of nucleotide, a so-called codon in mRNA, codes for the same amino acid in nearly all organisms. In the messenger RNA molecule, there is more information than merely the triplets required for the encoded proteins. The protein encoding information is preceded by a piece of RNA that allows binding to the ribosome, while after the triplet encoding the C-terminal amino acid, there is some RNA that functioned in the termination of the transcription process. Thus, signals are required to guarantee within the mRNA molecule a proper start and finish for the polypeptide synthesis. Near the 5' end of the mRNA, a specific triplet coding for the amino acid methionine dictates the proper start of the polypeptide synthesis, and near the 3' end, a specific triplet, a stop codon, dictates a proper finish of the polypeptide synthesis. जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जीन्स के अंदर लोकेटेड होती है जो कि डिस्क्रीट सेगमेंट्स हैं सेलुलर डीएनए के. ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में जीन्स कॉपी की जाती हैं इनटू आरएनए, जिसे हम राइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज. आरएनए मॉलिक्यूल्स जिनमें मैसेंजर आरएनए शामिल है स्पेसिफाई करता है अमीनो एसिड कंपोजिशन को जो एक्चुअली सेलुलर प्रोटीन्स फॉर्म करेंगी. जो अदर टाइप के आरएनएज हैं जो कि ट्रांसक्रिप्शन से डिराइव होते हैं, लाइक राइबोसोमल आरएनए या ट्रांसफ़र आरएनए, ये दोनों टाइप के आरएनएज पार्टिसिपेट करते हैं ट्रांसलेशन प्रोसेस के अंदर. माइक्रो आरएनएज रिसेंटली फाउंड हुए हैं, हर तरह के सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम siRNAs भी कहते हैं. ये siRNAs या माइक्रो आरएनएज इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस की रेगुलेशन में. जीन कोड्स की अरेंजमेंट और न्यूक्लियोटाइड्स की अरेंजमेंट जीन कोड्स के अंदर और अमीनो एसिड्स सीक्वेंस पॉलीपेप्टाइड चेन में जेनेटिक कोड की आइडेंटिफिकेशन, ये सारी डिस्कवरीज़ हैं जो डीएनए की एपोक में एक माइलस्टोन है.
न्यूक्लियोटाइड्स डीएनए में ट्रिपलेट्स की फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं और कॉन्सिक्वेंटली वो एमआरएनए में भी ट्रिपलेट्स की फॉर्म में ट्रांसक्राइब होते हैं और ये ट्रिपलेट कोड करता है अमीनो एसिड की कंपोजिशन को जो एक्चुअली प्रोटीन की सिंथेसिस में हेल्पफुल होगी। जेनेटिक कोड में जो इम्पोर्टेंट फाइंडिंग है वो ये है कि जेनेटिक कोड ऑलमोस्ट यूनिवर्सल इन नेचर है, यानी इट्स सेम फॉर एवरी टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। गिवन ट्रिपलेट ऑफ न्यूक्लियोटाइड जिसको हम कोडॉन कहते हैं एमआरएनए के अंदर, वो सेम अमीनो एसिड्स को कोड करता है नियरली ऑल ऑर्गेनिजम्स में। मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल के अंदर ट्रिपलेट्स कोड्स के अलावा भी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है जो कि प्रोटीन इनकोडिंग में और ट्रांसलेशन में हेल्पफुल होती है। प्रोटीन इनकोडिंग की इंफॉर्मेशन प्रोसीड करती है मैसेंजर आरएनए के पीस से जो एक्चुअली बाइंड करता है राइबोसोम में और सी टर्मिनल अमीनो एसिड से कोडिंग स्टार्ट होती है या ट्रांस आरएनए की फंक्शनिंग स्टार्ट होती है। सिग्नल्स रिक्वायर होते हैं विद इन मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल ताकि प्रॉपरली ट्रांसलेशन स्टार्ट हो सके और फिनिश हो सके या पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस स्टार्ट हो सके या फिनिश हो सके। मैसेंजर आरएनए की फॉर्मेशन के दौरान 5 प्राइम एंड के ऊपर एक स्पेसिफिक ट्रिपलेट कोड प्रेजेंट होता है जो अमीनो एसिड मीथियोनाइन के लिए प्रेजेंट होता है। दिस कोड इज़ नोन एज अ स्टार्ट कोडॉन और 3 प्राइम एंड के ऊपर एक स्टॉप कोडॉन प्रेजेंट होता है जो ये डिक्टेट करता है कि पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस अब फिनिश हो जाएगी। The genetic code on the basis of the triplets in the mRNA is presented in this table. One may see that there are 3 different stop codons. These are 3 different stop codons: U, A, U, G, A, and U, A, G. Moreover, it is clear from this table that the code is highly redundant. For certain amino acids, there are several codons here. Like you can see, there are 4 codons which codes for serine, and there are almost 6 codons which codes for leucine. Whenever there is a choice between various codons for one amino acid, different organisms tends to show different preferences. Later, it will become clear that this organism-dependent codon preference has consequences for certain biotechnological processes. Transcription starts with the binding of the enzyme RNA polymerase at a specific site called promoter site. Immediately upstream from a gene or from a set of genes transcribed as an operational unit and operon. Promoters vary in their efficiency to bind RNA polymerases. Some promoters, the strong promoters, are highly efficient while others are weak and often require additional factors for effective binding of RNA polymerases. Promoter structures in prokaryotes as well as in eukaryotes have been studied in great detail. Based on such studies, it is now feasible in biotechnology to fuse very effective promoter structures to any gene that one wishes to be expressed. After binding of the RNA polymerases, the DNA helix is partially unbound and subsequently the transcription process starts. RNA synthesis then proceeds with the ribonucleotides ATP, GTP, CTP and UTP as building units. One DNA strand in the gene, the so-called template strand, serves as the matrix for this RNA synthesis.
Like in the DNA synthesis, the RNA synthesis runs anti-parallel in the direction 5' to 3' and proceeds in a complementary way. The latter implies that a G in the matrix DNA leads to the C in the RNA, a C leads to a G, a T to an A, while an A in the DNA shows up as a U in the RNA. The transcription may stop either on the basis of the intrinsic structural features of the RNA at the end of the gene or the operon, or by the intervention of a specific terminating protein factor at the site. Transcription can be regulated at various stages in the process. The intrinsic properties of the promoter next to various kinds of proteins that can either repress or stimulate the binding of RNA polymerase regulate the transcription start. Transcription termination can also be regulated. Termination may, under the influence of physiological factors, occur at a premature state. Alternatively, the normal termination signal could be ignored, a process called read-through. This may lead to various lengths of transcripts starting from the same promoter. Finally, gene activity can also be regulated at the level of the formed mRNA. All transcripts are subject to degradation, but rates of degradation can vary widely. Some transcripts have a short half-life time, while others are very stable. Biotechnologists try to influence the expression of a gene encoding a relevant biotechnological protein at each of these regulation levels in order to achieve optimal production. ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होती है जब आरएनए पॉलीमरेज एक स्पेसिफिक साइट के ऊपर, जिसे हम प्रोमोटर साइट कहते हैं, बाइंड होता है डीएनए के साथ। इमीडिएटली अपस्ट्रीम जीन के अंदर फॉर्म होती है विच इज़ ट्रांसक्राइब्ड एज ऑपरेशनल यूनिट और एन ओपेरॉन, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। कुछ प्रोमोटर्स स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर्स होते हैं और वह हाईली एफिशिएंट होते हैं, जबकि कुछ प्रोमोटर्स वीक प्रोमोटर्स होते हैं और उन वीक प्रोमोटर्स में एडिशनल फैक्टर्स रिक्वायर होते हैं ताकि इफेक्टिव बाइंडिंग हो सके आरएनए पॉलीमरेज की। प्रोमोटर स्ट्रक्चर प्रोकैरियोटिक सेल में और यूकैरियोटिक सेल में ग्रेटर डिटेल के अंदर स्टडी किया गया है, और इन्हीं स्टडीज़ की बेसिस के ऊपर बायोटेक्नोलॉजी में ये फीजिबिलिटी है कि इफ़ेक्टिव प्रोमोटर्स को फ्यूज़ किया जाए किसी भी जीन स्ट्रक्चर में जो कि जिस जीन से प्रोटीन्स को एक्सप्रेस करवाना है। आरएनए पॉलीमरेज जब बाइंड हो जाता है डीएनए की हेलिक्स स्ट्रक्चर में, तो डीएनए हेलिक्स पार्शियली अनबाउंड होता है और ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। आरएनए की सिंथेसिस में राइबोन्यूक्लियोटाइड्स एज बिल्डिंग यूनिट्स रोल प्ले करते हैं। एक डीएनए स्ट्रैंड की जीन में से जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है वो एक्चुअली मैट्रिक्स का काम करती है फॉर आरएनए सिंथेसिस। जैसे कि डीएनए सिंथेसिस में एंटी पैरेलल स्ट्रैंड रन करती थी, इसी तरह से आरएनए सिंथेसिस में भी एंटी पैरेलल डायरेक्शन के अंदर कॉम्प्लीमेंट्री वे में न्यूक्लियोटाइड्स की अटैचमेंट होती है 5' to 3' की डायरेक्शन में। आरएनए और डीएनए की सिंथेसिस के अंदर सिर्फ एक डिफरेंस है कि यहाँ पर थाइमीन रिप्लेस हो जाती है, थाइमीन न्यूक्लियोटाइड बेस रिप्लेस हो जाती है यूरेसिल के साथ। ट्रांसक्रिप्शन को स्टॉप किया जा सकता है इंट्रिंसिक स्ट्रक्चरल फीचर्स की वजह से जो आरएनए के अंदर प्रेजेंट होते हैं एट द एंड ऑफ द जीन या फिर ओपेरॉन में। ट्रांसक्रिप्शन को वेरियस स्टेजेस के ऊपर प्रोसेस में रेगुलेट भी किया जा सकता है। प्रोमोटर की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज़ रिप्रेस करने में या स्टिमुलेट करने में आरएनए पॉलीमरेजेस को एक रोल प्ले करती हैं, जो एक्चुअली ट्रांसक्रिप्शन को रेगुलेट करती है फ्रॉम द स्टार्ट। ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन को भी रेगुलेट किया जा सकता है। टर्मिनेशन फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स के थ्रू भी हो सकती है और ये प्री मैच्योर स्टेज के अंदर भी अकर हो सकती है। अगर टर्मिनेशन प्री मैच्योर स्टेज के अंदर हो रही है तो इट कैन बी इग्नोर्ड। नॉर्मल टर्मिनेशन सिग्नल
can also be ignored, और इस process को read through का mechanism कहते हैं, and this may lead to various lengths of transcripts जो कि एक ही promoter से निकलेंगे. Finally, gene activity को भी रेगुलेट किया जा सकता है at the level of the formed mRNA. Translation is a complex cellular process where mRNA molecule, ribosomes, and tRNA molecules, amino acids, amino acyl synthetases, and a number of translation factors act together in a highly coordinated way. The ribosome, an organelle built from the ribosomal RNA molecule and proteins, is the cellular structure where the various compounds for the protein synthesis assemble. The building elements of the proteins, the amino acids, are used in the protein synthesis in a form adapted for a convenient interaction with the mRNA. The adaptation of the amino acid is achieved by coupling it to a specific tRNA molecule through the catalytic action of a specific amino acyl synthetases. The adapted amino acid is linked to the 3' hydroxyl terminus of a specific tRNA molecule, and each tRNA molecule contains in a characteristic loop of the molecule in a specific triplet. This triplet is complementary and runs anti-parallel to the codon for the linked amino acid, and is consequently designated as the anticodon. Coupling through base pairing of the anticodon into the tRNA to the codon in the mRNA is the way amino acids are positioned according to the code in the mRNA. Translation starts with the formation of a specific initiation complex. In a bacterial cell, this consists of a 30S ribosomal subunit, a tRNA carrying the amino acid methionine, GTP, and various initiation factors, all at the position of the start codon, AUG, of the mRNA. To form the initiation complex, the 5' end region of the bacterial messenger is important. This region, which itself is not translated, harbors a specific binding site. To the initiation complex, a 50S ribosomal subunit is subsequently bound, creating a functional 70S ribosome. Translation then proceeds with the help of specific elongation factors in such a way that 70S ribosomes are transported along the mRNA molecule stepwise over a distance of one triplet. This stepwise transport guarantees that protein synthesis proceeds in a coordinated way dictated by the triplet codons. The amino acids delivered by specific tRNA molecules are linked together one after the other by peptide bond formation. Meanwhile, the tRNA carriers are set free again. At the end of the mRNA molecule, there are one or more stop codons. These triplets do not accept any tRNA amino acyl molecule and are therefore terminating signals of protein synthesis. After termination, the protein is released from this ribosomal subunit. The ribosomes then fall apart in their 30S and 50S subunits, which may be used in a further translation cycle. Although there is a common general picture for translation in prokaryotes and eukaryotes, there are nevertheless various distinct differences, especially in the nature of initiation and elongation factors. A very clear distinction is a direct consequence of the difference in DNA organization between pro and eukaryotes. In the prokaryotic cell, mRNA is already available for the ribosomes while it is still in the process of transcription. In the eukaryotic cell, on the other hand, the mRNA is not available for translation after it is completely synthesized and after it is transported through the nuclear membrane. Consequently, transcription and translation are coupled processes in prokaryotic cell,
while these processes occur separately in eukaryotic cell. ट्रांसलेशन कॉम्प्लेक्स सेल्यूलर प्रोसेस है जहाँ पर mRNA मॉलिक्यूल्स, राइबोसोम्स, tRNA मॉलिक्यूल्स, अमाइनो एसिड्स, अमाइनो एसाइल सिंथेटेजेस और ट्रांसलेशन फैक्टर्स सब मिलकर काम करते हैं एक हाईली कोऑर्डिनेटेड वे में. राइबोसोम एक ऑर्गेनील है विच इज़ एक्चुअली बिल्ड फ्रॉम rRNA मॉलिक्यूल्स एंड प्रोटीन्स. इस सेल्यूलर स्ट्रक्चर में वेरियस कंपाउंड्स जो कि प्रोटीन सिंथेसिस की असेंबली में हेल्प कर रहे होते हैं, आरएनए मॉलिक्यूल्स उसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है. बिल्डिंग एलिमेंट्स प्रोटीन्स के अमाइनो एसिड्स हैं और ये यूज़ होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में. अमाइनो एसिड्स की एडेप्टेशन अचीव की जाती है by coupling it to a specific tRNA molecule through catalytic action of a specific amino acid synthetases. Amino acid synthetases tRNA के साथ amino acids को couple करते हैं. Adapted amino acid actually 3' hydroxyl terminus के साथ लिंक होता है specific tRNA molecule में. यहाँ आप देख रहे हैं tRNA मॉलिक्यूल के साथ लाइजीन लिंक्ड है. ये लाइजीन अपने 3 हाइड्रोक्सिल टर्मिनस से लिंक्ड है tRNA के अंदर. एक tRNA मॉलिक्यूल में एक कैरेक्टरिस्टिक लूप होती है फॉर मॉलिक्यूल और इसमें एक स्पेसिफिक ट्रिपलेट कोडॉन ट्रिपलेट प्रेजेंट होता है जिसे हम एंटी कोडॉन्स कहते हैं. ये एंटी कोडॉन्स एक्चुअली कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं इस मैसेंजर RNA में जहाँ पर कोडॉन्स प्रेजेंट हैं. ट्रांसलेशन स्टार्ट होती है विद द फॉर्मेशन ऑफ इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स. बैक्टीरियल सेल के अंदर ये इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनता है 30th राइबोसोमल सब यूनिट में. एक tRNA कैरिंग अमाइनो एसिड प्रेजेंट होता है जिससे एक्चुअली मेथियोनाइन के लिए एंटीकोडॉन जिसमें प्रेजेंट है मोस्टली UAC. GTP प्रेजेंट होता है और वेरियस इनिशिएशन फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं इस रीजन में जिसको हम स्टार्ट कोडॉन कहते हैं जो कि एक्चुअली AUG है mRNA का. यहाँ से इनिशिएशन स्टार्ट होती है ट्रांसलेशन की. इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए 5' रीजन बैक्टीरियल मैसेंजर RNA का इम्पॉर्टेंट है. इस रीजन के अंदर ट्रांसलेशन इटसेल्फ नहीं होती लेकिन ये स्पेसिफिक राइबोसोम बाइंडिंग साइट्स हार्बर करता है. इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स 50s राइबोसोमल सब यूनिट का बाउंड करता है विद 30s फंक्शनल 70s फॉर्म करने के लिए. ट्रांसलेशन उस वक्त स्टार्ट होती है विद द हेल्प ऑफ स्पेसिफिक इलोंगेशन फैक्टर्स और इस तरह से स्टार्ट होती है कि ये जो 70s कॉम्प्लेक्स है ये मूव करता जाएगा अलॉन्ग दी mRNA मॉलिक्यूल स्टेप वाइज, यानी 3 कोडॉन्स जब एंटी कोडॉन से मिल जाएंगे तो ये फर्दर फॉरवर्ड मूव कर जाएगा स्टेप वाइज डायरेक्शन में. इस GIF वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं कि किस तरह से mRNA फॉरवर्ड मूव कर रहा है और ये 70s सब यूनिट एक ट्रिपलेट कोडॉन को एंटी ट्रिपलेट कोडॉन के साथ ज्वाइन करके पॉलीपेप्टाइड चेन की सिंथेसिस करवा रहा है. मीनवाइल tRNA कैरियर्स जो बॉन्ड फॉर्मेशन या पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेते हैं वो फ्री हो जाते हैं. एट द एंड ऑफ mRNA मॉलिक्यूल देयर इज़ 1 or more स्टॉप कोडॉन्स. ये ट्रिपलेट कोडॉन्स या ट्रिपलेट्स tRNA को या tRNA अमाइनो एसिड मॉलिक्यूल को फर्दर एक्सेप्ट नहीं करते. इसी वजह से टर्मिनेशन हो जाती है या टर्मिनेटिंग सिग्नल दिया जाता है प्रोटीन सिंथेसिस में. टर्मिनेशन के बाद प्रोटीन इज़ रिलीज फ्रॉम दिस 70s राइबोसोमल सब यूनिट और राइबोसोम अगेन फॉल अपार्ट हो जाता है इनटू 30s एंड 50s सब यूनिट्स जो कि फर्दर ट्रांसलेशन साइकिल में यूज़ किए जा सकते हैं. ऑल्दो ये कॉमन जनरल पिक्चर है फॉर ट्रांसलेशन की प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में, लेकिन डिस्टिंक्ट फीचर्स एग्जिस्ट करते हैं स्पेशली इनिशिएशन की नेचर में और इलॉन्गेशन फैक्टर्स में दोनों टाइप के सेल्स के अंदर. क्लियर डिस्टिंक्ट फीचर जो डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस है DNA ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंस का एक्चुअली प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में है कि DNA साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोटिक सेल में, वाइल DNA ऑर्गेनील्स में या न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है यूकैरियोटिक सेल. प्रोकैरियोटिक सेल में मैसेंजर RNA ऑलरेडी अवेलेबल होता है राइबोसोम्स को और
ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। लेकिन यूकैरियोटिक सेल के अंदर मैसेंजर आरएनए सिर्फ उस वक्त अवेलेबल होता है ट्रांसलेशन के लिए आफ्टर इट इज़ कम्प्लीटली सिंथेसाइज, जिसमें से इंट्रॉन्स ओमिट किए जा सकें और सिर्फ एक्सॉन्स प्रेजेंट हों और वो ट्रांसपोर्ट हो जाए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से साइटोप्लाज्म में। कॉन्सिक्वेंटली ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर कपल्ड प्रोसेस है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल के अंदर ये दोनों प्रोसेसेस सेपरेटली अकर होते हैं। That's the end of today's topic. Christian Cantrell is a science fiction writer and software developer. He once wrote that because the thing about viruses is that they are easily manipulated. The DNA they inject does not have to be destructive. It can be replaced with almost any kind of DNA you want. And it can be programmed to only replace certain parts of the host's genetic code. In other words, viruses are perfect vectors for genetic engineering. Let's call it a day. Thank you for listening to this lesson. Take care of yourself and everyone around you. Allah Hafiz.